अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं सन्ददे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशिनि ते नमः। कृष्ण गोविन्द हे रामनारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे। अच्युतानन्त हे माधवादोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक। राक्षसक्षोभित सीतया शोभितो दण्डकारण्यभू पुण्यता कारणः। लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो अगस्त्य सम्पूजितो राघव पातु मां। धेनुकारिष्टकानिष्टकृद्वेषिः केशिः कंसहृद्वंशिका वादकः। पूतना कोपक सूरजाखेलनो बालगोपालक पातु मां सर्वदा। विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वासनं प्रावृढं बोधवत् प्रोल्लसद्विग्रहं। वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। कुञ्चितैकुन्तलै भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुण्डलं गण्डयोः। हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे। अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पूरुषसस्पृहं। वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भर सस्यवश्यो हरि जायते सत्वरम्। इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतम् अच्युताष्टकं सम्पूर्णम्।